Welcome all viewers. My side, Amrish Kumar Mandal here from Management System Consultancy. Today we will discuss on the topic of greenhouse gases. उसका concept, greenhouse gas किसको कहते हैं, कौन-कौन को categorize किया जाता है greenhouse gas के अंदर, and vital topic on scope 1 emission किसको कहते हैं, scope 2 and scope 3 emission concept को लेके हम लोग चर्चा करेंगे. So first we have to understand the ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेप्ट को. क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस आर गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, preventing it from escaping into space. The natural process helps regulate Earth's temperature, but excessive accumulation of certain GHGs, greenhouse gases, due to human activities has led to global warming and climate change. This is the concept of the understanding of the GHG. Okay. Now, common greenhouse gases कौन-कौन है, जिसको मेनली कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस कौन-कौन है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस प्राइमरली फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस मेन सोर्सेस है, एंड डिफोरेस्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएटेड कौन-कौन और कंट्रीब्यूट करता है उसमें, लाइक एज मीथेन CH4, रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, livestock means farming, rice cultivation, waste decomposition, and fossil fuel extraction. Nitrous oxide N2 eliminated from agricultural activities, industrial processes, and burning fossil fuels. Fluorinated gases include कौन-कौन है, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, and sulfur hexafluoride, used as refrigerators, fire supplements, and various industrial processes. So those are the basically common greenhouse gases for your identification. Now quickly we will discuss on the point of scope wise, scope 1, scope 2, scope 3 emissions. Okay, ये अंडरस्टैंड लेना बहुत जरूरी है. स्कोप 1 बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट कंट्रोल में है, डायरेक्ट एमिशन फ्रॉम सोर्सेस ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बेसिकली स्कोप 1 एमिशन. कुछ एग्जांपल जैसे ऑन साइट कॉम्बस्टन, मतलब ऑन साइट जो हम लोग फॉसिल फ्यूल को कॉम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे नेचुरल गैस, गैसोलीन, डीजल फॉर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ओन जो हम लोग खुद से जो जनरेट करते हैं स्कोप 1 के अंदर. फ्यूल कंबस्टन इन कंपनी ओन्ड व्हीकल्स, जहां से फ्यूल हम लोग जला के कंपनी खुद का जो व्हीकल्स है उसमें हम लोग जो जनरेट करते हैं, स्कोप 1 एमिशन में आता है. ऑन साइट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दैट रिलीज GHG, खुद का ऑर्गेनाइजेशन का खुद का जो प्रोसेस से जो जनरेट होता है. ओके, दैट इज बेसिकली स्कोप 1 एमिशन. नाउ स्कोप 2 एमिशन. स्कोप 2 एमिशंस बेसिकली इनडायरेक्ट एमिशन जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में नहीं है, फ्रॉम जनरेशन ऑफ परचेज इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आपका कंट्रोल में नहीं है लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, ओके, आप स्टीम यूज कर रहे हो हीट के लिए, तो दोज आर द कंसीडरेशन बेसिकली फॉर स्कोप 2 एमिशन के लिए. इनडायरेक्ट एमिशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ परचेज इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, हीट और कूलिंग कंज्यूम बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कंज्यूम करते हैं. This emission occurred when energy is produced off-site, जो कंपनी के साइट में नहीं होता है, off-site and purchased by the organization. एग्जाम्पल क्या क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो परचेज होता है ग्रिड से, हम लोग परचेज करते हैं, which may be generated from, वो जनरेट होता होगा फॉसिल फ्यूल से, रिन्यूएबल सोर्सेज से, ओके, और मिक्स ऑफ कंडीशन में. स्टीम और हॉट वाटर परचेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. दोस आर बेसिकली स्कोप 2 एमिशन. नाउ scope 3 emission. Scope 3 emission is little bit different. वो भी indirect emission है, not included in scope 1, scope 2, but occurring कहां से? Upstream and downstream. कंपनी जहां से परचेज करता है और जिसको बिकता है, मतलब जो सप्लाई करते हैं जिसको, ओके, that is under the control of scope 3 emission.
These emissions are associated with activities that the organization does not own or control, but that contribute to its overall carbon footprint. Examples कौन-कौन है? Upstream activities जैसे extraction and production of purchased materials, transportation of purchased fuels, raw materials and finished products, emission associated with the generation of purchased electricity. So that is this is the under upstream activities. Downstream activities, transportation of products sold to customer. जो आपको किसी को बिक्री कर रहे हो, जिसको सेल कर रहे हो, तो transportation of the products sold to customer, emissions from the used of sold products by customers. Okay, आप जो यूज कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट को, that is emission also under the scope 3. Waste disposal and end of life treatment for product. आपका प्रोडक्ट, उसका वेस्ट डिस्पोजल एंड एंड ऑफ लाइफ, जितना तक आपका एंड ऑफ लाइफ है, फुल अंडर द स्कोप ऑफ द स्कोप 3 emissions. ओके, नाउ ये तो क्लियर हो गया. Why it is important to understand scope 1, scope 2, scope 3 emission? क्या इंपॉर्टेंस है? Comprehensive carbon footprint. Accounting for all three scopes provides a more complete understanding of the organization's total greenhouse gas emission. Of course, जो आपका डायरेक्ट है, आप जिसको परचेस कर रहे हो, ऑन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. आइडेंटिफाइंग एमिशंस हॉटस्पॉट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रायोरिटाइज reduction efforts and targets areas with the greatest potential for impact. Setting reduction goals, आप goal set कर सकते हो, establish science-based targets, requires a clear understanding of baseline emissions across all scopes. Engaging with suppliers and customers, आपको supplier customers का engage हो सकता, collaboration with suppliers and customers to reduce emission throughout the full value supply chain, drive significant reduction. Regulatory compliance. Many jurisdictions require organizations to report greenhouse gas emissions, including scope 1, scope 2, scope 3. Now, controlling methodology, जो controlling greenhouse gas emission industrial action क्या-क्या हो सकता है, वो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे. ओके, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन. इस पॉइंट्स का मतलब क्या है? इंप्रूव एनर्जी efficiency, implement energy efficient technologies, upgrade equipment, and optimize process to reduce energy consumption. Conserve energy, promote energy saving practices among employees, reduce energy waste, and optimize building operations. Now, renewable energy adoption means secondary. Primary है electricity, secondary renewable. जो जैसे इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी में आप इन्वेस्ट करो, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स. यूटिलाइज एनर्जी स्टोरेज, इंप्लीमेंट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लाइक बैटरीज, pumped hydro to ensure a reliable and sustainable energy supply. Now, carbon capture, utilization and storage. उसमें क्या है? Capture carbon emission, capture carbon dioxide from industrial process and power plants. Utilize carbon, use captured carbon dioxide for various applications such as enhanced oil recovery, carbonated beverages and synthetic fuels. आप उसको यूज कर सकते हो कैप्चर करने के बाद. Store carbon, store capture carbon dioxide in underground geological formations. Okay, those are the points आप कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो. Industrial process optimization. Process optimization identify and eliminate inefficiencies in industrial processes to reduce energy consumption and greenhouse gas emission. आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. Adopt clear technologies, invest in clear technologies and equipment that emit fewer in greenhouse gases. Clear technologies adopt करने के बाद. Okay. Now what next? Transportation decarbonization. Electricity transport EV में आप
promote the adoption of electric vehicles and develop charging infrastructure, improve public transportation, invest in efficient public transportation system to reduce reliance on individual vehicles, encourage cycling and walking, create safe and accessible cycling and walking paths to promote active transportation, land use and forestry, protect forest, conserving exist forest and reforest degrade areas to absorb carbon dioxide. सबको पता है sustainable agriculture is a vital point. Promote sustainable agriculture practices that reduce emissions and enhance soil carbon sequestration, reduce deforestation, आप उसको reduce करो, policy and regulatory measures. उसका अंदर में क्या है? Carbon pricing, it's a vital point. Implement carbon pricing mechanism such as carbon taxes or emission trading schemes to incentivize emission reductions. Renewable energy targets, set ambitious targets for renewable energy adoption to accelerate the transition away from fossil fuels. Energy efficiency standard, enforce energy efficiency standards for buildings, appliances, and vehicles. Now, technological innovation. This is also very much important. Research and development. Invest in research and development to develop new technologies and solutions from reducing greenhouse gas emission. Foster innovation. Create a favorable environment for entrepreneurship and innovation in clear energy and climate technologies. So those are the basically points for control of हम लोग कर सकते हैं as per industrial action के हिसाब से for greenhouse gas emissions. So mostly these are the topics for today's discussion. Our contact numbers are already been given over there, our website and other contact numbers. You can directly contact with us. We are actively working on the greenhouse calculation, greenhouse consultancy purpose. वीडियोस को आप लोग लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर प्रमोशनल पर्पस. हम लोग की भी हम लोग टाइम टू टाइम टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो शेयर करते हैं. थैंक्स फॉर व्यूइंग.